सभासदों, माननीय सभापति जी, papers to be laid on the table. श्री कौशल किशोर। महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री हरदीप सिंह पुरी जी की ओर से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर उनके नाम के सामने सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में पटल पर रखता हूँ। साध्वी निरंजन ज्योति। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित प्रपत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करते हैं। श्री अश्विनी कुमार चौबे। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यावली के क्रम संख्या 1 के खंड 2 पर अपने नाम के आगे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। श्री पंकज चौधरी। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 5 वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्री सोम प्रकाश। Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Srimati Anupriya Singh Patel, I rise to lay on the table of the House paper listed against her name at serial number 6 in the revised list of business for today. Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against the name of my colleague Sri Rajiv Chandrasekhar at serial number 7 of today's revised list of business. Susri Shobha Karand Laje. Respected sir, I lay the papers shown in serial number 8 of the revised list of business in the Rajya Sabha for today on the table of the House. Srimati Darshana Vikram Jardosh. Respected sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at the serial number 9 of the Ministry of Textiles as the today's revised list of business. Shri Som Prakash. Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 10 in the revised list of business for today. Shri Kaushal Kishore. सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री BL वर्मा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 12 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री देवू सिंह चौहान। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 13 of today's revised list of business. Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against the name of my colleague Dr. Bharti Parveen Pawar at serial number 14 of today's revised list of business. Shri Kaushal Kishore. सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं अपने सहयोगी श्री विश्वेश्वर टुडू की ओर से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 15 पर उनके नाम के सामने सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई। Chairman sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 16 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Dr. L. Murugan.
Respected Chairman, sir, with your kind permission, I raise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 17 of today's revised list of business. Thank you, sir. Papers to be laid on the table. CAG reports. Shri Pankaj Chaudhary. सभापति महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड 1 के अधीन निम्नलिखित प्रतिवेदनों का एक एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। पहला, मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, संघ सरकार के वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालय विभाग 2023 का प्रतिवेदन संख्या 24। और दूसरा, मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, संघ सरकार सिविल केंद्रीय स्वास्थ्य निकाय 2023 का प्रतिवेदन संख्या 25। 2022 तीसरा, 22-23 के वर्ष के लिए रक्षा सेवाओं के संघ सरकार विनियोग लेखें। डॉक्टर भगवत कराड़. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table under Clause 2 of Section 19A of the Comptroller and Auditor General's Act 1971, a copy in English and Hindi of the report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March 2022, Union Government. Report number 15 of 2023, a compliance audit of activities of selected CPECs. Thank you, sir. Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 8th February 2024 has agreed without any amendment to the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024, which was passed by the Rajya Sabha at its sitting held on 6th February 2024. Report of the Committee on Papers laid on the table, Shri Harnath Singh Yadav. माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने के संबंध में राज्यसभा के पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 171वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करता हूं। Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare, Shri Bhuvaneshwar Karita. Shri Sanjeev Arora. Chairman, sir, I rise to present a copy each of the following reports in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare. 156th report on review of National Ayush Mission and 157th report on quality of medical education in India. Thank you. Statements by Ministers, Shri Purushottam Rupala. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make the statement regarding status of implementation of recommendations contained in the 53rd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on demands for grant 2023-24 pertaining to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy. Thank you. Shri Som Prakash. Respected sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Srimati Anupriya Singh Patel, I rise to make a statement regarding status of implementation of recommendation of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce contained in its 177th report on action taken by government on the recommendation observation contained in the 171st report of the committee on issues affecting the Indian tea industry, especially in Darjeeling region. Susri Sobha Karandlaje. Respected sir, I rise to make the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 55th report of the Standing Committee on Agriculture,
animal husbandry and food processing on demands for grants pertaining to the Ministry of Food Processing Industries. Honorable members, in the list of notices of matters raised with permission, 0 hour, selected through ballot for today, notices of Shri Naresh Bansal, Shri Vikramjit Singh Sahni are on similar issue of drug addiction. Similarly, the notices of Shri Sant Balbir Singh and Dr. V. Shivdasan are on the issue of adverse effects of climate change. These notices are similar nature, would be clubbed together, and one member may associate with the other. Shri